Disclaimer. This film is a tribute to my beloved father, late Sri Rakesh Kumar Gautam, directed and produced by Swayam Media and Production. Swayam Media has taken all the responsibilities of each and every content of these episodes, which are based on the journey of doctors who have done a commendable job for the society and have been selflessly dedicated, thus giving super specialty facilities in the respective cities. The content of these episodes are shot by the team of Swayam Media and Production, without any commercial part or support from the real medical practitioners. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, नित नई ऊंचाइयों को छूता, प्रगति की ओर बढ़ता प्रदेश। कुछ ही वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव के साथ, उम्मीदों के साथ तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। इस बदलाव व स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने वाले चिकित्सकों की कहानी है हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रोग्राम, हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगरा का इतिहास गौरवशाली अतीत की गवाही आज भी देता है। इस शहर की समृद्धि और संस्कृति को देखने दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। मोहब्बत की नगरी आगरा के ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों की श्रेणी में रखा जाता है। सही मायने में कहा जाए तो ताजमहल ने आगरा को यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना दिया है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से आगरा कृषि पर आधारित है, लेकिन साथ ही चमड़े के छोटे बड़े लघु उद्योगों ने लोगों को अपार रोजगार दिए हुए हैं। यहाँ के बने चमड़े के जूते व अन्य उत्पाद देश और दुनिया में निर्यात होते हैं। विकास की बात करें तो इस शहर ने तेजी से अपने आप को विकसित किया है। यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इस शहर को आगे ले जाने में पूरी मदद कर रही हैं। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नारी शक्ति मिशन को सशक्त बनाने में रेनबो हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा अहम किरदार निभा रही हैं। आगरा की ही नहीं बल्कि दूर दूर से महिलाएं अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए अपने विश्वास के साथ डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा की ओर रुख करती हैं और इन लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए डॉक्टर जयदीप दशकों से कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ सफल इलाज करती हुई आ रही हैं। आगरा के रेनबो हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर्स की टीम और अपने पति डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा के साथ आज की हाईटेक और चिकित्सा की नई तकनीकी मशीनों के साथ डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने आईवीएफ और फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं से हजारों महिलाओं को छुटकारा दिलाया है तथा उन्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। इसी को देखते हुए चिकित्सकों के जीवन पर आधारित देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रोग्राम हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड में इन्हें चुना गया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा से उनके चिकित्सा सफर के बारे में। आई एम डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा। आई वाज बोर्न इन मेरठ in a defense background family. I had 2 younger brothers and my father was in Air Force and then he started his own business. My early part of schooling was done at Springdale's, Delhi, and later on I continued my schooling at St. John's High Secondary School, Meerut. In school, I was a very, very active child and I was very good in studies, sports, debates and everything. I actually played almost everything what could be possibly played, and that got me the first girl captain of the school very early in a co-ed school, which was for the first time somebody became a captain of the school. So then life went on and I came to Aligarh Muslim University to do my pre-medical and after that got admitted into Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh. And I was the first doctor in my family because most of my family from both my parents and my grandparents of both the sides, they had defense background. And the inspiration of becoming a doctor, the credit goes to my Bua, my father's sister, who actually was a wonderfully excellent student and academically oriented. She always wanted to be a doctor, but
as circumstances would have it, she could not. And she really inspired me that we should have one doctor in our family. So that's how I actually came in. We had a very humble background, and I actually had no support in the sense that there used to be a lot of coachings which used to happen at that time for medical entrance exams. So I actually did not do any coaching. My father gave me 100 rupees and said, go ahead and fill as many entrance forms as you can. And I could only fill 3 forms. And I got selected in 2 medical colleges at that point of time. So the journey became that I shifted to Aligarh and started, staying in the hostel. And as the medical colleges, it's a tough going. And I was actually, though very good in studies, but I was absolutely overawed by the kind of, studies which you have to do in a medical college. And the first 2 years were really tough because I actually did not have many books. I had to go to the library, and I got the Vice Chancellor's scholarship, which assisted me in my studies. But that was a wonderful, wonderful period in the college. In the college itself, apart from studies, as I had a good sports background, I actually won the Best Sportswoman award twice. After getting married also, after having a child, because I got married very early, because in the college itself I met Dr. Naren, and we were married when we were interns. And after that, once we got married, we came here to Agra and we worked for a year as interns. Then we went back to pursue our post-graduation. And in between, I had our first child, Niharika, and we had to leave her behind. And her grandmother, her dadi, actually looked after her for the next 3 years while we both of us finished our post-graduation to join the family hospital, Malhotra nursing home, coming back in 1986. It has been a phenomenal journey, because then after that, how 15 years passed by, upgrading, training, then adding new things into the hospital, one after the other, ultrasound, laparoscopies, then IVF, then I had my second child in between, and a lot of academic work. Now, once I started IVF in 1996, a great family tragedy struck. I lost my mother and my younger brother together in an accident, and within a span of 2-3 years, I lost my father and the other brother. So it was a very, very tough period in my life. And there was a dream which my mother-in-law, who was a very, very popular obstetrician of Agra, she always used to tell me, why don't you go and do, your MRCOG? I really want one of my child to have this degree. And we were so engrossed in the work and helping our parents and, helping the public of Agra and giving all the services that we didn't really realize. But I never knew that one day that Royal College will come and give me honorary fellowship. So today I feel very, very proud and privileged to have received both the honorary fellowships of the Royal College of England and also of Ireland. And it's really been a satisfying journey. We went on to start Rainbow Hospital. That also had a story, because I lost my father because a lot of good critical care services were not available in Agra at that point of time. So that was a time when I really determined myself that we are going to provide Agra with the first very well equipped and very well run critical care unit, and that's where Rainbow Hospital got established, and God has really helped us. And along with that, we always wanted to do some philanthropic work. So today I'm very proud that Rainbow runs a dialysis unit which is very, very
low cost, which helps poor people, and we also are having a Rain Basera, which is absolutely free of cost, where the attendants of all the critically ill patients can stay, have a change and all those things. We are supporting a lot of girls from our NGO Smriti, which educates the girl child and makes them stand on their own 2 feet, because women's empowerment is something which our whole family believes in. Because once the women of the house are empowered, then the whole nation is going to really flourish, and that's what the ethos of our family is. And I don't know where I'm going to stop, but I definitely know that this is just half of the work which I have done. There's loads and loads to achieve. We am right now working on a program called Adbhut Matratva, which is a holistic care to pregnant women, because this program basically believes that the sanskar and all the foundation of the diseases is actually laid in a mother's womb. So if a mother gets good care in pregnancy, then the child and the upcoming future generations are going to be really healthy and wise. And we've developed an app which is called as iMoms app, which has actually recently won the Atmanirbhar app contest amongst 7,000 apps. And this is a wonderful app which helps the pregnant women in their journey. इंडिया न्यूज़ और स्वयं मीडिया द्वारा डॉक्टर्स के इस प्रोग्राम हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड यूके के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही रेडियो फीवर एफएम को भी सहयोग के लिए धन्यवाद। कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहें। मैं अशु मित्तल, क्लब 35+ की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ये एक नॉन मेडिकल क्लब है जो मैं डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा के साथ चला रही हूँ। हम करीब लास्ट 15 ईयर्स से ये क्लब आगरा में चला रहे हैं, और आज जो मैं को एक बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर जयदीप के बारे में बोल रही हूँ, जिनको कि आप ये समझिए कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। पूरा आगरा शहर क्या, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उन पर गर्व करता है। और जैसे आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, ऐसे ही डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा के लिए जाना जाता है, क्योंकि यूपी में और नेपाल में दोनों ही जगह फर्स्ट IVF बेबी प्रोड्यूस करने वाली डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा हैं। और वो एक चिकित्सा में तो उन्होंने, जितना आप सभी को पता है कि वो फॉक्सी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, इस्पात की रह चुकी हैं, एस्पायर की रह चुकी हैं। उसके अलावा बीइंग अ वेरी गुड डॉक्टर, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर, शी इज़ अ वेरी गुड मदर, शी इज़ अ वेरी गुड डॉटर इन लॉ, शी इज़ अ वेरी गुड वाइफ। मतलब जिस भी फील्ड में मैं उनके लिए बोलूँ वो कम है। एंड शी मेंटेन्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अ प्रोफेशन एंड हर फैमिली लाइफ। अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि जैसे हम लोग सब घर के अंदर बंद थे, वो भी हॉस्पिटल कम ही जा पा रही थी सुबह के समय, क्योंकि हम लोग कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं बुला रहे थे बाहर से। एंड व्हेन शी टोल्ड मी कि वो सुबह 5 बजे उठ के घर में झाड़ू पोछा भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी धोती हैं और फिर हॉस्पिटल भी जाती हैं। आई वाज अमेज्ड टू हियर दैट। तो डॉक्टर जयदीप के बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं सुरेश चंद्र गर्ग, चेयरमैन तपन एग्रो इंस्टीट्यूट आगरा। हेल्थ आइकन यूपी एंड उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इंडियन न्यूज़ चैनल एंड स्वयं मीडिया के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर के लिए उठाए गए इस कदम की मैं बहुत सराहना करता हूँ। रेडियो फीवर भी इसके लिए बधाई का पात्र है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर केशव मल्होत्रा है और मैं रेनबो IVF का डायरेक्टर हूँ, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर का डायरेक्टर हूँ और मल्होत्रा एम्ब्रियोलॉजी ट्रेनिंग एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। IVF एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत रैपिडली एडवांस हो रही है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, IVF का जो फर्स्ट बेबी हुआ था, जो लुई ब्राउन है, वो हैपेंड इन 1978 एंड उसके बाद से अगर आप देखो अगले 40 साल के अंदर इतने एडवांसेस हो गए हैं इस फील्ड में, जहाँ पे पहले 15% के आसपास सक्सेस रेट आ रहा था, अब वो कहीं बढ़कर ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग टू 50 to 55 to even 60% प्रेगनेंसी रेट इन आवर पेशेंट्स। रेनबो IVF आगरा में इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में एज मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर
And since then, all of us have actually strived to get all of these technology, जितने भी सारे एडवांसेस हैं, हमने यही कोशिश करी है कि ये आके आगरा की पब्लिक को और यूपी के जो पेशेंट्स हैं उनको हम लाइक अधिक से अधिक जो बेहतर ट्रीटमेंट है उनको लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकें. नाउ अगर मैं हमारी लैब की थोड़ी सी बात करूँ तो जो एडवांसेस हमारी लैब में आए हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली मेल फैक्टर की बात करते हैं, बिकॉज 40% जो पेशेंट्स आते हैं किसी भी आईवीएफ सेंटर में उनको पुरुष बाचपन या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, और उनके लिए इक्सी एक टेक्निक होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो ये माइक्रोस्कोप के साथ मैं बैठा हूँ, इस माइक्रोस्कोप पे उनका इलाज होता है. इस पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है शुक्राणु को चूज़ करके अंडे के अंदर इंजेक्ट करता है. इसके बाद भी बहुत सारे एडवांसेस हैं जो प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जिनके बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, जैसे कि आपके मिसकैरेज हो रहे हैं या आपने 3 या 4 बार आईवीएफ कहीं ट्राई कराया है और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उन पेशेंट्स में एम्ब्रियोस्कोप नाम का एक इंक्यूबेटर होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो एम्ब्रियो ग्रो करता है 5 दिन लैब के अंदर, उसका एक वीडियो कैप्चर होता है, और ये रियल टाइम में आप उस वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं, और उसमें कोई भी अगर डिफेक्ट लग रहा है या वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, कभी तेज़ ग्रो करता है, कभी स्लो ग्रो करता है, वो वाले एम्ब्रियोज आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनको चूज़ नहीं किया जाता है, और जो नॉर्मली एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसको चूज़ करके ट्रांसफ़र किया जाता है. और इससे देखा गया है कि करीब 19% प्रेगनेंसी रेट में इंक्रीज़ होता है सक्सेस. लेज़र एक और टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है, और ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनके अंदर जैसे कि एज ज़्यादा है, जैसे 38 से ऊपर अगर आपकी एज है, उनके अंदर क्या होता है, अंडे की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है. सो जो भ्रूण बनता है वो उस लाइनिंग के बाहर नहीं निकल पाता है और यूट्रस पे अटैच नहीं हो पाता है. सो उन पेशेंट्स के लिए हम लेज़र से उस पर शॉट मारते हैं, और उससे इसका जो हैचिंग होती है भ्रूण की, उसको फैसिलिटेट करते हैं. एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पिछले साल यहाँ पे लगाई है, उसको इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग कहते हैं. आप लोगों ने सबने गुड न्यूज़ तो मूवी देखी ही होगी, और इस मूवी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि आईवीएफ के अंदर मिक्सअप हो सकते हैं. वैसे ये मिक्सअप्स बहुत रेयर हैं. अगर आप पूरे वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स देखें तो करीब 0.1% केसेस में ये मिक्सअप्स होते हैं. I'm Professor C.N. Purandare, past president of the International Federation of Gynecology and Obstetrics. Dr. Jaideep Malhotra, whom I have known for many years, has been a committee member under me of the Reproductive Endocrinology Committee and has done exemplary work in FIGO. Currently, she has been elevated to the chair of the same committee, and I'm sure will do great work for the obstetricians and gynecologists in the world at large. As president of the FOXY, she worked very hard on various issues and has been a great champion for the obstetricians and gynecologists of India. I wish her all the very best for whatever that she plans to go further and do, and her contribution will be, I'm sure, will be a great help to the women of India. Good morning to you, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank TV channel to give me an opportunity to talk about Dr. Jaideep Malhotra. Permit me to introduce myself. My name is Professor Rajeshwar Dayal. I am the professor and head of the Department of Pediatrics, SN Medical College, Agra. To describe my association with Dr. Malhotra, I am reminded of a saying, खुद को बुलंद कर इतना ते तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. This is a saying which perfectly describes the achievements of Dr. Malhotra in the last quarter of a century. It has been a privilege to have been associated with Dr. Malhotra and Malhotra Nursing Home for the last about half a century.
To recall our old association, my father came to Agra in the 1950s and he was the first pediatrician in Agra. At that time, Dr. Prabha Malhotra and Dr. Rajen Malhotra were running the Malhotra nursing home as the pioneer obstetricians in the city of Agra. मैं डॉक्टर रंजना बंसल हूँ और मैं MD अशोक ऑटो सेल्स हूँ। मैं प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और बिजनेस भी करती हूँ संग संग। मेरा साथ जयदीप और नरेंद्र से उनके मेडिकल कॉलेज टाइम से है। मैं इस परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ और हम लोग एक साथ ही मेडिकल में आए। और आज के दिन अगर मैं कुछ बात करूँगी जयदीप के बारे में तो शी इज़ not only a doctor but she has got a very holistic personality. एक अच्छी माँ, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मदर के संग संग एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट तो है ही। और अभी तक मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार कपल्स को, इनफर्टिलिटी वाले कपल्स को IVF के द्वारा इस जयदीप ने और नरेंद्र ने बहुत बड़ा काम करा है। इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट IVF सेंटर्स खोले हैं और ये ख्याति नेपाल और बांग्लादेश और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दे हैव बीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉक्सी एज अ कपल, डॉक्टर नरेंद्र एंड जयदीप। तो ये मेडिकल अचीवमेंट्स तो हैं ही हैं, संग में जयदीप के पास वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक महिला में हो। I am Dr. Dinesh Baswal, ex-Joint Commissioner, Maternal Health, Government of India. When Foxy has been a valuable partner with Government of India, and when Dr. Jaideep Malhotra took over in 2018, we had started a program by the name of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. She helped us in reaching the unreached and enrolling more and more doctors for providing services to the pregnant woman. She is a very passionate person for the women's cause, and she has been helping in developing various films. She developed a film by the name of Garbh Sanskar Adbhut Matritva. She developed and designed and floated an app called iMoms, a pregnancy companion. This app addresses pregnancy in a holistic way and is based on the ancient culture of Garbh Sanskar and addresses issues of pregnancy and fetus in utero. The app was awarded the best indigenously designed app in India as PM Matrit Atmanirbhar App Challenge Award. I wish her all the success. Thank you. Hi, I am Dr. Niharika Malhotra and I am the Director of Rainbow Wellness and also Malhotra Test Tube Baby Center, Agra. So I began my journey as a gynecologist around 12 years back. Before that, I never wanted to become a doctor. I had seen my parents working very hard and somehow, somewhere, I thought I would like to take a easier branch. But slowly, as I grew up, I realized that being a doctor is one of the best professions which can be. And that's what I've seen through my parents. So I studied my MBBS in Pune and then I went for my post-graduation in OBGYN in Savangi, where I got a gold medal, and then I super specialized in reproductive medicine and also fetal medicine from Singapore. And now I'm back to Agra and I'm working in Malhotra Nursing Home as a full-time obstetrician and also an infertility specialist in Rainbow IVF. So my journey has been very beautiful and I have learned a lot from both my parents. Both of them are very different and I think I've got best of both in me. So if we talk about our dad a little bit, I think your point is absolutely correct when you say that both of them are very different. And dad brings in a lot of energy, a lot of zeal and a lot of enthusiasm into anything and everything that he does. And it starts right from
like if we talk about playing carom or something like that, he brings in so much energy into the smallest of things, and that's something that I think both of us really admire about him. Yes. And it's not just smaller things. When we talk about bigger projects, when we talk about serving the patients, etc., he puts his heart and soul into each and everything, and that's something that both of us are still learning. And I think that's something that is really, really important if you want to have a connect with your patients, and that's something that we've probably learned from our dad. So when dad puts in energy, someone has to put in precision, and that's what I think my mother does. She has to make everything go the right way, and that's how I think they balance each other, and that's how we are learning to balance our life. Everybody has struggles through their life, through their journey, and I have seen both of them struggling, and even during their struggles they have given their best, and that's what I want to learn, and that's what I'm learning. We as a family also run a small NGO called Smriti, and we are doing a lot of work for Save the Girl Child, women empowerment, and now we are working for the environment. We also do a lot of free IVF, free surgeries, because somehow we somewhere feel that it's so important to give back to the society. The love which we are getting from the society, we have to give it back in some way or the other, and that's how we are trying to give it back. I am Rajendra Bonwal. I am from Lucknow. I was in IAS, and my last posting was as a state election commissioner of UP. Friends, I know Dr. Jaideep Malhotra. She is a very eminent doctor, another very prominent doctor in IVF. I know her for the last 30 years. Very hardworking doctor, very intelligent, and very proficient in her profession. She has brought a smile on so many faces all over the country. Not only all over the country, but beyond the boundaries of the country also. She has done a wonderful job in the field of IVF. She is the president of the IVF association in the country. I know her personally, and I'm happy to say that while she gives 100% to her profession, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने डॉक्टर जयदीप मेहरोत्रा से सीखी हैं. आई एम ट्रू एंड इट्स श्योर कि डॉक्टर जयदीप मेहरोत्रा, जो कि आप लोग जानते हैं कि रेनबो हॉस्पिटल जो आगरा में है, उसकी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर है, और उनको मैं कम से कम 25-30 साल से जानती हूँ. उन्होंने मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है. शायद वो भी आज ये बात को नहीं जानती है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है अपने लाइफ में. जो मैंने किया तो किया, लेकिन सेम टाइम आदमी अपनी पूरी उम्र से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और मैंने डॉक्टर जयदीप से बहुत कुछ सीखा है. सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर लेडी हैं कि जिस काम में वो लग जाती हैं उसे वो कभी भी पीछे नहीं छोड़ती. मैं उनके साथ रही हूँ, मैंने उनके घर पे भी उनको देखा है. वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक लेडी हैं, जिनकी हर चीज़ बिल्कुल सिस्टम से चलती है. जिस दिन जो उनका काम है उसे उस दिन उन्हें पूरा करना ही होता है.